हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिदा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ब्यूटीफाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज हम करने लगे हैं पिंक एंड पर्पल मेकअप, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत यूनिक है अब, लेकिन मैं इसको ट्राई तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया था, तो लेट्स ट्राई दिस। आई एम यूजिंग लिस का प्राइमर for my eyes and face. Yes, so now I'm gonna use MAC NC25 base with my favorite brush. Now I'm gonna blend it with the beauty blender. Okay, now I'm gonna use Massarat Miswa's face powder. Now I'm gonna use Huda's beauty palette, my favorite, because we are doing pink and purple. So I'm gonna start with the light pink. Now I'm gonna add उससे थोड़ा सा डार्क पिंक एंड देन पर्पल। हम इन तीनों शेड को मिक्स करके अप्लाई करेंगे, बट ओनली इन द क्रीज, सो इट विल बी लाइक this. Okay, and before using anything, just make sure कि आप अपना ब्रश एक दफ़ा now I'm gonna add this purple. Okay, I'm using another kit जिसमें मेरा purple shade है. I'm gonna put this with the help of my finger on my eyelid. Yes. आज हमने अपने आउटर कॉर्नर्स को नहीं किया, वी जस्ट हैड अ सिंपल वन आई शेडो ऑन आवर आईलिड, सो हमने वो अप्लाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ फिंगर। इफ़ यू वांट तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट विद द फिंगर आई फील लाइक कि ये बहुत अच्छे से लग जाता है। एंड नाउ फॉर दोज जो नहीं यूज़ कर सकते, फिंगर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हे वी गो विद द ब्रश। So this is really nice, pink, purplish and light pink, and that's really amazing. Now हम start करने वाले हैं eyebrows. Use any bronzer, anything you are comfortable with. So I'm gonna do my eyebrows. Now हमने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था with, आपको भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आई एम रियली कंफर्टेबल विद द वैसलीन। आई नो आप कहेंगे वैसलीन, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर मी। सो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया। नाउ आई एम गोना यूज़ ब्रीथेबल
concealer for my dark circles and for my dark spots, जो कि बहुत ज़्यादा है, trust me. Okay, now I'm gonna use base MAC NC25, but before that मैं अपना ब्रश यूज़ करने वाली हूँ जो मैं हमेशा अपने आई पे यूज़ करती हूँ, जिसको मैं अपने ब्रश पे मैंने बेस लगा दिया है. एंड आई एम गोना डू दिस. मैं अपनी लैश लाइन से ऊपर ब्रश को लेके जाऊँगी द हेल्प ऑफ दिस. Yes. Yeah. So, like this, to give my eyes a sharp look. Now, this is my favorite brush for the application of base. Because this is the most common makeup these days to give a sharp look to your eyes. Honestly, it doesn't go with me, so I never do it too much. But to tell you people, if you don't have like, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है available, but you want that sharp look, so you can use this trick. So go upwards with your base. Okay, it's done. Now I'm gonna use Masayat Misbah's face powder. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, because I don't know आपके लिए क्या suitable है. मेरी स्किन को बहुत suitable है ये. I have really sensitive skin, तो मैं ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकती. Like I can't try different products. The most important thing, never forget your neck and your ear. So we are done with this. Now I'm gonna use the same brush and I will go bit upwards with the brush. Okay, first we're gonna do contouring, highlighter, and then we will do eyes. Now for my nose, I'm gonna use another brush. Okay, so now time for the highlighter. So I'm gonna use Glam Glow highlighters, one of my favorite. This is the most favorite part, क्योंकि I really love कि मेरा face glow करे. So I'm using highlighter of Glam Glow. So now this is called fan brush, and I'm gonna highlight my specific areas. Okay, and I forgot to put blush on, but it's okay. कभी-कभी हो जाता है. So actually मैं इतनी excited हो जाती हूँ highlighter को देख के कि I forgot this. But अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप ब्लश ऑन को लेकर so yes, here we go. Now
I'm gonna put mascara before my lashes. I mean, applying lashes. So make sure कि आप अच्छे से पहले मस्कारा लगा लें. तो हमारा मस्कारा लग चुका है. I'm gonna use lashes. Where is it? So yes, lashes. Okay, so we are done with the lashes and eyeliner. Now I'm gonna do a very interesting thing. This is my outline जो कि मेरे lip के लिए है. So I'm gonna add this in my inner eye. So let's see how it looks. So हमने अपने inner eye में pink को use कर लिया. This is new for me. So it was interesting. Now I'm gonna add pink and purple for my lower lash line. So let's see how it look. And now I'm gonna add purple in it. So yes, it is interesting. Well, now I'm gonna add silver for my eyebrow arch. Let's see how it goes. Again, I told you it's not necessary, it's not important, you have to do it. If you really want to do it or you feel comfortable, just go for it. But for me, I mean, I love to do it. So this is one of my favorite parts, and this is my signature. Like, I love to do it. Well, now I'm gonna add mascara for my lower lashes. And now I'm going to use the pink outline. So well, मैं यूज़ तो कोई और कलर करने वाली थी, बट ये अच्छा लग रहा है. So well, जो मैं यूज़ करने वाली थी वो है दिस इज सुपर मैट का पिंक. लेट्स सी कि ये कैसा लगता है. Okay, so finally we are done with this. This was really interesting. I hope you will like it and just try it. मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं होती हैं. So I love to do it and try new things, different challenges. Well, and please subscribe my channel, share my videos more and like my videos. See you in the next tutorial. Bye.